Hello, good afternoon. Good afternoon, boys and girls. Hello, good afternoon. Good afternoon, boys and girls. Barin Ghosh, very good afternoon. Just give me the clearance, please. Barin Ghosh. Audibility and visibility clearance. Siddhi Rathod. क्या वीडियो ऑडियो क्लियर है? Can we start? All clear. Thank you so much. So very good afternoon to all of you. Welcome to Unacademy and Dr. Khalil here. वेलकमिंग यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स नया आगाज सीरीज। और आज का हमारा लेक्चर है मेमोरी मैनेजमेंट में। स्टार्ट करेंगे वर्चुअल मेमोरी। ओके पिछली क्लास में हमने पेजिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग देखे हम, एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पेजिंग विल सी एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि वर्चुअल मेमोरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए और सेमेस्टर एग्जाम के लिए, उनके लिए यूजफुल रहेगा। सो दैट आई प्लान टू डिस्कस वर्चुअल मेमोरी इन टुडेज सेशन। Generally, in the industry, it is popularly called as VM, virtual memory. So we are going to see what exactly is virtual memory, उसका concept क्या है, उसकी effectiveness, I mean usefulness क्या है, and then we'll see its implementation और उसके बाद उसका performance. Performance में temporal issue देखा जाएगा, timing aspect, right? And then we are going to look into like page replacement algorithms और फिर थ्रैशिंग। ये डिस्कशन होगा विथ रिगार्ड टू थ्रैशिंग। सौरभ, इफ यू आर फेसिंग सिंक्रोनाइजेशन में जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ा हार्डशिप होती है। उसका सोल्यूशन सिंपल यही है कि आपने बार बार लेक्चर्स देखना है, बार बार स्टडी करना है फ्रॉम टेक्स्ट बुक और थोड़ा प्रैक्टिस करना है बाय मेकिंग ए ट्रेस, जैसे हमने क्लास में बताया था आपको, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन इम्प्रूव योर सिंक्रोनाइजेशन एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज वर्चुअल मेमोरी बाय डेफिनेशन। सो लेट अस राइट हियर। As I said, we write in short VM. So by definition, I can say that virtual memory gives an impression or illusion. Gives an illusion to the programmer or user or programmer that a huge amount of memory, you can say huge or large amount of memory is available for executing programs that are larger than the given or available फिजिकल मेमोरी। यहां पर फिजिकल मेमोरी का मतलब है फिजिकल एड्रेस स्पेस। ये बेसिक डेफिनेशन है वर्चुअल मेमोरी का। फिजिकल एड्रेस स्पेस गिव्स एन इल्यूजन और इंप्रेशन और अजम्पशन। आपको ये इंप्रेशन दिया जाएगा कि यू हैव ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी, large amount of physical memory available for executing programs that are greater than the size of available physical memory. Boys and girls, अगर आप रिमेंबर करो while discussing or starting memory management, हमने कहा था memory manager has two important goals: effective or efficient utilization of memory, in the sense that it should not lead to wastage. That means have less internal and external fragmentation. Wastage of memory is called fragmentation. Secondly, हमने कहा था second important goal is to manage the execution of larger program in small memory area.
कि कैसे आप एक बिगर प्रोग्राम है, लार्जर प्रोग्राम है, आप उसे स्मॉल मेमोरी एरिया में एग्जीक्यूट करोगे। वहां पे आप पूछ सकते हो, सर व्हाट इज एडवांटेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए लार्जर प्रोग्राम इन स्मॉल मेमोरी एरिया? The advantage is perhaps you can load more programs and thereby you can keep the processor most often, so that may impact the throughput of the system or the performance of the system. So that is the goal. Like when we discussed the basic paging technique, if you remember, यहाँ पर भी हमने जो नया आगाज सीरीज लेक्चर में देखा था, if I assume a virtual address space is equal to 8 KB and imagine the corresponding physical address space is 4 KB. And if we assume, for example, page size 1 KB, we know that the number of pages जो होंगे, number of pages, I write n, number of pages, that will be equal to 8. And the number of frames available, say m dash is the number of frames, that will be equal to 4. तो मतलब ये है कि प्रोग्राम का साइज हो सकता है 8 KB, that has 8 pages, लेकिन अवेलेबल फ्रेम्स आपके पास सिर्फ 4 है। सो हियर वी आर गोना स्टडी, वी आर गोना लर्न हाउ कैन वी मैनेज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाउ कैन यू एग्जीक्यूट एन 8 KB प्रोग्राम इन मेन मेमोरी ऑफ फिजिकल ऑफ 4 KB, ये नहीं कह रहे हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड, प्लीज अंडरस्टैंड, मैनेज। आप मैनेज कैसे कर सकते हो एग्जीक्यूशन ऑफ एन 8 पेज प्रोग्राम इन 4 फ्रेम। देखिएगा, एक्चुअली स्पीकिंग, इफ माई प्रोग्राम हैज 8 पेजेस, आई नीड 8 फ्रेम्स, लेकिन मेरे पास 8 फ्रेम्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ 4 फ्रेम्स है। So how am I going to manage the execution of an 8 KB program, 8 page program in 4 frames? ये हम कैसे करेंगे, ये कुछ हम learn करने वाले हैं यहाँ से। तो in short, if you remember and recollect, we said that the generated logical address or virtual address in this system is 13 bits and the corresponding physical address is 12 bits. And as per the previous notion, the virtual address will have two parts. हमने कहा था, if you remember, P and D. ठीक है, this is 3 and 10. Why? Because there are 8 pages, so I need 3-bit page number. And the page size is 1 KB, so therefore page offset is 10 bits. And the corresponding physical address will have two parts, frame number and offset. Frame number in this example is 2 bits. Why? Because there are 4 frames. 4 frames के लिए 2 bits लगेंगे frame number. पेज साइज, पेज ऑफसेट वही 10 बिट रहेगा। सो दिस इज अ फॉर्मेट फॉर फिजिकल एड्रेस 12 बिट्स। तो हम अब देखेंगे कि हाउ विल द प्रोसेस मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ एन 8 पेज प्रोग्राम इन 4 फ्रेम्स ऑफ मेमोरी, देखेंगे आप। सो आई विल टेक अ नेक्स्ट पेज। इमेजिन फॉर एग्जांपल दिस इज द CPU and when some process runs on CPU for our given system, जो हम अभी डिफाइन किए सिस्टम, as I said, it will generate a 13-bit virtual address. I'm explaining you virtual memory concept only through the same example. ये जो example है, ये example के perception से मैं explain कर रहा हूँ। So as per the concept, it will generate a virtual address space. It will access or generate a virtual address space of 8 KB. ये virtual address space है। So I'm assuming here there are 8 pages. Let us mark the pages. This P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. ठीक है? And here let us say the 4 frames are available to us. These are the 4 frames. You can mark the frames. So this is physical address space, 4 KB. This is a virtual address space, 8 KB. This frame 0, frame 1, frame 2, frame 3. सिंपल पेजिंग टेक्निक में हमने मान के चला था, हमने अज्यूम किया था कि आउट ऑफ दीज 8 पेजेस 4 ऑफ देम विल बी लोडेड एंड देन वी ट्रांसलेटेड द एड्रेस। अब यहाँ हमें ये लर्न करना होगा कि हाउ कैन वी मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ एन 8K प्रोग्राम, इन 4 frames of memory, 8 page program in 4 frames of memory. तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि अल्टीमेटली वेयर इज दिस प्रोग्राम अज्यूम टू बी स्टोर्ड। ये 8 पेज प्रोग्राम, 8 पेजेस ऑफ द प्रोग्राम कहाँ स्टोर होंगे।
वो important aspect है. Where is virtual memory get mapped onto, get stored onto? It is getting mapped or stored onto a disk. So we imagine we have a disk here. We have a disk here, secondary storage device. So let's say this is a disk, or you can say secondary storage device. So on the disk we assume that we have some 8 pages distributed randomly around the disk, somewhere here. These are the 8 pages, maybe here P0, maybe here P5, maybe here P7, maybe here P3, maybe here P2, and so on. So as such, अगर आप diagrammatically समझो तो I would say that this is getting stored onto disk. This is mapping. The 8 pages of the program are mapped onto disk, are stored onto disk. So initially we assume the program is stored onto the disk. All the 8 pages of the program are stored onto the disk. और क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले शायद हो सकता है maybe I can load any of the 4 pages. कोई भी 4 pages आप लोड कर सकते हो non-contiguously, because this is a non-contiguous allocation. So imagine, for example, I am loading P5 here, P3 here, P0 here, and then P7 here, something like this. Any of the 8 pages, any of the 4 pages can be stored in the 4 frames of memory. So this operation, I will name it as load the pages. So here I am saying load pages. So out of 8 I have loaded 8 pages, sorry 4 pages. Out of 8 I have loaded 4 pages. अब इसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन में स्टार्ट. एग्जीक्यूशन के लिए जैसे आपको पता है, यू नीड ए पेज टेबल. ऑलरेडी वी स्टडीड दैट इन पेजिंग. पेज टेबल का फॉर्मेट यू ऑलरेडी नो वेरी वेल. द पेज टेबल विल हैव नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस. तो बच्चों हमारे पास कितने पेजेस है? आई हैव 8 पेजेस. सो देयरफॉर हाउ मेनी एंट्रीज आर नीडेड? आई नीड 8 एंट्रीज. तो यहां पर बना लेते हैं 8 एंट्रीज. If you remember and recollect, earlier occasion we said that ये जो पेज टेबल है, number of entries equal to number of pages. What will page table entry contain? The page table entry contain, हमने कहा mandatory information is frame number. The page table entry always contain the frame number. तो यहाँ पर frame number तो रहेगा. Now along with frame number, now for virtual memory implementation, I will also store a bit called valid invalid bit. So here let me write V by I stands for valid invalid bit. ये बिट आपको इन्फॉर्म करेगा, प्रोसेस को इन्फॉर्म करेगा कि वेदर द रेफर्ड पेज, जो आप रेफर कर रहे हो, पेज को जो रेफर कर रहे हो, वेदर इट इज प्रेजेंट इन मेमोरी और नॉट. इट विल मेक इंफॉर्मेशन, इट विल गिव इंफॉर्मेशन टू द प्रोसेस वेदर द पेज इज अवेलेबल और नॉट. क्योंकि पॉसिबल 8 पेजेस जो प्रोसेस रेफर कर सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर पेज नंबर्स जो रेफर कर सकता है. इट मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट. लाइक इफ यू पॉपुलेट द इंफॉर्मेशन नाउ for the given data set, P0 present in frame 2, 2 is 1 0, so valid invalid bit is 1. Page 1 is not present, 0. Page 2 not present, 0. Page 3 present in frame 1, frame 1 is 0 1 2 bit, so 1. And then page 4 not present, 0. Page 5 present in frame 0, 1. Page 6 not present, 0. Page 7 present in frame 3, 1 1. So out of 8 pages, 4 entries will be valid. Out of 8 entries, 4 entries are valid, remaining 4 are invalid. Invalid का मतलब यह है कि those pages are not present in memory, but they are present on disk. लेकिन प्रोसेस जब रेफर करेगा उन पेजेस को, वो चाहे वो ये देखेगा कि they should be present in memory. तो ऑपरेटिंग सिस्टम how does it deal with the pages which are not present in memory? तो यहां पर when process refers the virtual address, जब जनरेट करेगा virtual address और रेफर करेगा कोई पेज को, I can have 2 possibilities. I can have 2 events. One is when page may be present in memory, and the other is page is not present in memory. So how are we going to deal with
pages which are referred and which are not referred. यहाँ पर देख लेते हैं. So virtual address is bifurcated into two parts. For our example, there is 3 bits and 10 bits. There are 8 pages, 3 bits, page offset, page size is 1 KB, so therefore 10 bits. Now what happens is, first I may refer to a page which is present in memory, like if I refer to page number 5, 3-bit value 101 is 5. So the event of referring to a page which is present in memory is called page hit. जब page hit होगा, so I follow traditional paging. I take out the frame number as usual. 2 bits. And the page offset 10 bit is already available here. We add here 10. तो ये जो आपको बनेगा ये है physical address. And using this physical address, traditionally you access physical address space. So this event of referring to a page, which is present in memory is called page hit. Page is found in memory. जिस तरह TLB hit है उसी तरह page hit है. Page is found in memory. And sometimes it may happen, as you know very well, if I refer to a page, like imagine for example the process now is referring to page number 2. 3-bit value 2 की क्या होगी? 010. So page number 2 not present, this valid invalid bit is 0. So this event of referring to a page which is not present in memory, is called page fault. This is called page fault. ठीक है? This is called page fault. Let me underline. This is called page fault. The event of referring to a page which is not present in memory is called page fault. क्यों? Page तो actually process का है, लेकिन it is not in memory right now. It is there, where, but on disk. तो प्रोसेस बोलेगा भैया मैं तो डिस्क से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअल मेमोरी मैनेजर बोलेगा भैया डोंट वरी, आई विल मेक अरेंजमेंट फॉर यू टू गेट दैट फॉल्टेड पेज इनटू मेमोरी. तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी मैनेजर विल टेक द चार्ज. So in the event when the process refers to a page which is not present in memory called page fault, right, that will generate a trap to the operating system. The VMM virtual memory manager will take the charge, block the process. जो process ने page को refer किया है causing fault, it will block the process. क्यों? क्योंकि IO चाहिए. Reading the page from disk is an IO operation. So as per notion, जब process को IO operation की जरूरत होगी, तो it will get blocked. So the steps जो होंगे, number 1, first step in page fault is the process causing page fault will get blocked. Then virtual memory manager will consult the disk manager. Disk manager के पास सारे details होंगे, what pages belong to which process and where are they. The disk manager in consultation with the device driver will load the page, will bring the page using DMA operation, direct memory access. It will locate the page on disk, bring the page from disk into main memory so that the process can continue its execution. तो पहले page आएगा virtual memory manager के पास. वर्चुअल मेमोरी मैनेजर प्रोसेस का फिजिकल एड्रेस स्पेस देखेगा कि इसके पास कितने फ्रेम्स है. देख रहे हैं कि देयर आर 4 फ्रेम्स. सो समटाइम्स इट मे हैपन दैट वन ऑफ द फ्रेम में बी एम्प्टी, या अब यहां पे केसेस है, आई हैव वन एम्प्टी फ्रेम. अगर एम्प्टी फ्रेम हो तो पेज विल बी डायरेक्टली कॉपीड इनटू दैट फ्रेम. पेज विल बी डायरेक्टली कॉपीड. अगर एम्प्टी फ्रेम ना हो, देन वी गो फॉर a concept called page replacement. That means out of, like imagine there are these pages, I am referring to page 2, page 2 is not available, I don't have empty frame, then we need to select one of the existing pages as a victim to bring the faulted page. तो हमें decide करना होगा among these pages कौन सा पेज हम select करेंगे as a victim to bring the faulted page. So for that we have different policies, page replacement policies. I can follow FIFO, I can follow LIFO, I can follow random replacement, I can follow optimal replacement, I can follow LRU, MRU, so on. तो हम आगे पढ़ेंगे. So we select one of the existing pages in memory as a victim to bring the faulted page. So now when I suppose for example I selected page number 3 as victim. So when I select page number 3, देखिएगा this page is a copy of the original page from disk. So after loading the page into memory, ऐसा हो सकता है कि I might have changed the contents of page 3. That is called page being dirty, page being modified. या ऐसा हो सकता है कि page has been not modified at all. तो the operating system virtual memory manager देखेगा whether the faulted page, whether the victim page जो victim page P3 है, is it modified or is it clean, is it dirty or is it clean. Clean का मतलब page in memory is same as page on disk. Dirty का मतलब page in memory is the latest one and this is an old copy.
तो जब अगर पेज मॉडिफाई हुआ हो इन मेमोरी, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई हैव टू सेव द पेज, आई हैव टू इंश्योर दैट द पेज इज सेव्ड ऑन टू डिस्क, आई हैव टू सेव दिस पेज। तो पहले हमें सेव करना होगा पेज को, इफ इट इज मॉडिफाइड, इफ इट इज डर्टी, then I will have to load the faulted page into memory. In that case मुझे दो डिस्क ऑपरेशन लगेंगे, one for saving, another for loading. अगर पेज मॉडिफाई हुआ हो, पेज के कंटेंट चेंज हुए हो, then I will have to save the page. इसके लिए मुझे एक डिस्क ऑपरेशन लगेगा, and then I will have to bring the faulted page from disk to memory, and that is another disk operation. Two disk operations are needed if the replaced page is modified. Otherwise I need only one disk operation. In case if I have empty frame, और अगर पेज मॉडिफाई ना हुआ हो, आई नीड ओनली वन डिस्क ऑपरेशन. सो वॉट एवर बी द केस, आई ब्रिंग द फॉल्टेड पेज. जब फॉल्टेड पेज आ चुका होगा मेमोरी में, उसके बाद हमें पेज टेबल को अपडेट करना होगा. आई विल हैव टू अपडेट द पेज टेबल. देखिए अर्लियर पेज 2 वाज प्रेजेंट इन मेमोरी, अब पेज 2 रिप्लेस हो चुका है. पेज 3 वाज अवेलेबल इन मेमोरी, अब पेज 3 अवेलेबल नहीं होगा. Then I will have to change the bit of page 3 and then change the bit of page 2. Page 2 was not available. Now page 2 is available. So I have to update the page table. पेज टेबल को अपडेट करने के बाद द प्रोसेस कॉजिंग पेज फॉल्ट विल गेट अनब्लॉक्ड. इट विल कम आउट फ्रॉम ब्लॉक स्टेट एंड गो टू रेडी स्टेट. रेडी स्टेट से जाने के बाद फिर जब भी व्हेनेवर इट रन्स ऑन सीपीयू, वो फिर से वही एड्रेस जनरेट करेगा जो पिछले बार पेज फॉल्ट कॉज किया था, which has caused a page fault. It will generate the same address. And now the page is referred. It is present in memory. That is page hit and it will continue. तो प्रोसेस को ऐसे लगेगा कि I have just got blocked for some time and able to continue. So boys and girls, this is what exactly happens in most of the contemporary desktop operating systems like Unix, Linux, Windows, Mac and other. They are all virtual memory based system with this implementation. So this aspect of paging, देखिएगा, we generate the address. I have two possibilities: page hit, page miss. Page is present in memory, page is not present in memory. If page is present in memory, I follow the traditional concept of paging. Page अगर available ना हो, page fault होगा, memory manager locate करेगा page on disk, then we bring the page into one of the empty frame if available. अगर empty frame available ना हो तो page replacement apply करेंगे. Page replacement में ये देखा जाएगा कि page is clean or dirty. अगर dirty हो तो we save the page, then we load the page. अगर dirty ना हो तो we only load the page, update the page table and then unblock the process. Process next cycle में फिर run करेगा, फिर वही एड्रेस जनरेट करेगा विच अर्लियर कॉज पेज फॉल्ट, एंड नाउ द पेज इज अवेलेबल, इट विल कंटिन्यू. सो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज अ सिंपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल मेमोरी. यह है सिंपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल मेमोरी. थोड़े बहुत पॉइंट्स यहां पे लिखूंगा मैं सो दैट इट विल हेल्प यू. सो दिस एस्पेक्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंटेशन इज कॉल्ड डिमांड पेजिंग. सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू, आई वांटेड टू टेल यू दैट virtual memory is implemented through डिमांड पेजिंग. जो अभी हमने आप डिस्कस किया वो है फिलॉसफी ऑफ डिमांड पेजिंग. वी जनरली राइट डिमांड पेजिंग इन शॉर्ट एज डीपी. डिमांड पेजिंग इज डीपी, राइट. यह डिमांड पेजिंग. डिमांड पेजिंग का मतलब, सिंपल मतलब है लोडिंग द पेजेस ऑन डिमांड. लेट मी राइट व्हाट इज डिमांड पेजिंग. लेट मी राइट इट हियर. शॉर्ट नोट्स आपके लिए लिखेंगे. What is demand paging DP? Demand paging simply implies loading the pages on demand. Loading the pages on demand at runtime. जब रन टाइम पर आपको पेज की जरूरत होगी, अगर पेज अवेलेबल ना होगा, then you are gonna load the page on demand at runtime into main memory. That is called demand paging. सो इन शॉर्ट, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, आप तो बता दोगे. अगर आपको यह भी पूछा जाए कि हाउ इज वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंटेड, आपका सिंपल वन लाइन आंसर होगा वर्चुअल मेमोरी इज इंप्लीमेंटेड थ्रू डिमांड पेजिंग. पीपल में आस्क, सर व्हाट इज डिमांड पेजिंग. डिमांड पेजिंग इज लोडिंग द पेजेस ऑन डिमांड एट रन टाइम. फिर आपको पूछा जाएगा कैन यू एलाबोरेट, तो आपने कहना होगा प्रोग्राम इज अज्यूम्ड टू बी स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक डिस्क इन द फॉर्म ऑफ पेजेस. Whatever pages are accommodatable, you load them in memory. और जो pages आप accommodate नहीं कर सकते, they will be there on disk, and which are loaded in memory, they are copies of the page. फिर उसके बाद process will start its execution. जब execution होगा, I can have two possible events. Page may be present, page may not be present.
the event of page being present in memory is called page hit, और पेज अवेलेबल ना हो तो पेज फॉल्ट और पेज मिस. पेज हिट अगर होगा तो हम कन्वेंशनल पेजिंग फॉलो करेंगे और एक्सेस करेंगे इंस्ट्रक्शन और डेटा करस्पॉन्डिंग पेज से. अगर पेज मिस होगा तो पेज फॉल्ट होगा. Then process get blocked. VMM virtual memory manager take the charge, bring the faulted page from disk into memory with possible page replacement or empty frame case, and then update the page table, unblock the process and continue. ये है कुछ definition of or implementation of virtual memory. So virtual memory implemented through demand paging, loading the pages on demand at runtime, right? And I would also like to make a mention for your ready case that डिमांड पेजिंग इज ऑफ टू टाइप्स जो हम बात कर रहे हैं. वन इज कॉल्ड प्योर डिमांड पेजिंग, जो आपको बाद में काम आएगा. प्योर डिमांड पेजिंग. इन प्योर डिमांड पेजिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस विल स्टार्ट विथ ऑल एम्प्टी फ्रेम्स. आप इनिशियली कोई भी पेजेस लोड नहीं करोगे. व्हेन प्रोसेस स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन, देखिएगा प्रीवियस डायग्राम में, जब आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे तो आई एम नॉट गोइंग टू लोड एनी ऑफ द 4 पेजेस. ऑल एम्प्टी फ्रेम से आप स्टार्ट करोगे. दैट इज कॉल्ड प्योर डिमांड पेजिंग. प्योर इसीलिए के प्योरली ऑन डिमांड बेसिस, राइट फ्रॉम द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इट विल कॉज पेज फॉल्ट. तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पेज फॉल्ट करेगा, आई लोड द पेज, देन सेकंड में कॉज, सो स्लोली आई फिल अप द फ्रेम्स. प्योर डिमांड पेजिंग. द ऑपोजिट ऑफ दैट इज कॉल्ड प्रीफेच डिमांड पेजिंग. इसका ऑपोजिट जो है ये है प्रीफेच डिमांड पेजिंग. प्रीफेच डिमांड पेजिंग. प्री का मतलब बिफोर, फेच मतलब ब्रिंग और लोड. प्रीफेच डिमांड पेजिंग. प्रीफेच डिमांड पेजिंग. तो नेम इज वेरी क्लियर. प्रीफेच, बिफोर एग्जीक्यूशन स्टार्ट, प्री fetch the pages, load the pages, and then you start executing. That is called prefetch demand paging. Most of the time basically follow pure demand paging, because यहां पे आपने कोई चीज डिसाइड नहीं करना है कि कौन से पेजेस आप इनिशियली लोड करोगे. You can directly start the execution. So prefetch demand paging may be slightly faster to start. Otherwise prefetch demand paging is slower to start, because I have to first load the pages, फिर उसके बाद आप execution start करोगे. So boys and girls, this is the implementation of virtual memory. थोड़ा बहुत डायग्राम से आप देख सकते हो यहाँ पर. This is the virtual memory pages, right? This is a memory map, मतलब this is a page table. This is a diagram from 𝐂𝐤𝐵IN textbook. ये physical memory में है. तो that means through page table you can access physical memory. This is your disk. On disk I have pages. These are all pages, boys and girls. ये जो है pages है. So we are saving the page and loading the page. The whole process of demand paging is explained here. Pages are loaded from disk to main memory and they are being accessed through page table. यहाँ पर processor से, CPU से, when process runs it will refer to the pages. ये है philosophy of virtual memory implementation. यहाँ पर देखिए, these are the steps. So here let me write the title of this. Let me write the title of this. Steps to service page fault. These are the steps that are taken in servicing page fault. Steps to service a page fault. We can say steps to service or in servicing page fault. Look at that. This is the processor. This is a CPU. Process running on it is referring to some instruction. ये instruction है. Virtual address generate कर रहे हैं for the instruction, right? We are referring to the page table. यहाँ पर देखिएगा two aspects. I mean this valid bit is 0, page fault. So it is a trap to operating system. Operating system मतलब यहाँ पर virtual memory manager. So what is page is on backing store. We are locating the page through disk manager. Virtual memory manager will consult with disk manager. Disk manager में page हमने identify किया. This is the page that I want to load. So we are bringing the page into one of the frame through page replacement or maybe through empty frame case. फिर उसके बाद we are updating the page table. फिर finally you can look at this step is important. Step number 6, we are restarting the instruction. फिर वही instruction जिसने page fault किया, we are going to start that instruction back. So these are the 6 steps that taken place in the event of page fault. Steps to service a page fault. Step 1, again I repeat, refer to the page table, cause a page fault, trap to operating system, interrupt to operating system.
Then operating system VMM, communicate with disk manager, locate the page, bring the page into main memory frame, update the page table, unblock the process, restart the instruction. These are the steps that take place in virtual memory implementation through page fault or page fault. ठीक है. अब यहाँ पर we will have some other important aspects with regard to virtual memory implementation. Like for example, there are 3 address spaces. यहाँ पर हमने जो बात की, एक है virtual address space, दूसरा है physical address space और तीसरा है disk address space. Disk की भी जो साइज है जहां पर आप प्रोग्राम स्टोर कर रहे हो, so I have 3 address spaces. What is the legal relationship between these 3 address spaces? This was a gate question. This question was asked in one of the earlier paper. What should be the legal relationship between virtual address space, physical address space and disk address space? In the real implementation, in practice, theoretical तो कुछ भी relation हो सकती है, but in practice, the physical address space is less than or equal to virtual address space is less than or equal to disk address space. Disk address space. This is a legal relationship in practice between the 3 address spaces. When the size of virtual physical address space is less than or equal to virtual address space, तभी आप बोलोगे you are supporting the goal of executing larger program in small memory area. तभी possible है. वरना बच्चों याद रखिएगा, theoretically I can have any relation between PS and VS theoretically, but in practice, in practical, I should have PS should be less than or equal to VS, and both should be less than or equal to disk. Virtual address space naturally has to be less than disk address space. क्यों? जो virtual memory है process की, it should be storable somewhere. So right now the virtual memory size is dependent on the or limited by the size of disk. So let me write the size. ये भी एक gate question था. The size of virtual memory. The size of virtual memory or virtual address space of a process is eventually limited by what? Is limited by the size of available secondary storage device. Secondary storage device where you are basically mapping or storing the virtual address space. ये 2 important aspect है, 2 important concept है with regard to virtual memory implementation. Based on this, let us review some of the questions, direct questions which were asked on the discussion which I made just now. Please have a look at this question, boys and girls, and let me know what is answer for them. Come on. इसका आंसर बताइए मुझे. What is answer for this question, boys and girls? In a virtual memory, the address space generated, the address space specified by the address lines of the CPU must be dashed than the physical memory size and dashed than the secondary storage size. इसका आंसर क्या होना चाहिए? अभी हमने कहा based on the relation which I gave just now, PS is less than or equal to VS is less than or equal to disk address space. Less than or equal to disk address space. So naturally address space specified by the lines of the CPU, मतलब virtual address must be greater than, ये आएगा greater than the physical memory size and less than the secondary storage size. Greater and smaller. So therefore correct option is C, not A ash. Many people have said correct answer, so therefore answer is C. एक और क्वेश्चन इसी तरीके का आप देख सकते हो, सोच सकते हो, बता सकते हो. टेल मी व्हाट इज आंसर फॉर दिस. ये भी पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया एंड दैट वाज आल्सो आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन वन ऑफ द पेपर. लुक एट दिस. अभी जो मैंने आपको बताया, the total size of address space in a virtual memory system is limited by what? It is not the length of MAR. It is not available main memory. It is available secondary storage. Just now I told it is dependent on the available secondary storage. So therefore the correct answer is B. Am I right? The correct answer is B. So questions like this on direct implementation were quite number of times asked in earlier papers. So be sure with the implementation. So implementation काफी important है with regard to virtual memory.
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे विथ रिगार्ड टू परफॉर्मेंस ऑफ वर्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, जो परफॉर्मेंस इश्यूज है यहां पर वर्किंग वर्चुअल मेमोरी में जो आपने डिस्कस करना है, जो प्रिपेयर करना है गेट के पर्सपेक्टिव से, पहले मैं वो टॉपिक्स लिखूंगा यहां पर, so that you can basically accordingly steer yourself to that preparation. First issue is the temporal issue. What is the impact of time? That means the impact on effective memory access time in demand paging. Like for example, page fault is going to play a crucial role. जब भी पेज फॉल्ट होगा, you are going to make access to disk that involve disk access, and we know that disk access is slow access. So how page fault is going to impact on the performance of virtual memory? That means how you are going to make an equation for effective memory access time in general, वो आपको पढ़ना होगा. Second important aspect is page replacement. Second important performance issue is page replacement. That means from the available pages कौन सा पेज आप रिप्लेस करोगे, विक्टिमाइज करोगे टू ब्रिंग द फॉल्टेड पेज. उसके लिए कई ऑप्शंस है, कई पॉसिबिलिटीज है, वो सेकेंड इशू है. थर्ड इशू परफॉर्मेंस इशू जो आपने प्रिपेयर करना है, जो आपने स्टडी करना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम एंड इंटरव्यू, एंड दैट इज कॉल्ड थ्रैशिंग. Thrashing is an important issue in virtual memory systems that have a greater impact on the performance of virtual memory system. Thrashing का बेसिक डेफिनेशन है हाई पेज फॉल्ट रेट. वो हम बाद में देखेंगे एज ए सेपरेट टॉपिक. जब पेज फॉल्ट रेट ऑफ प्रोसेस शूट्स अप, बहुत ज्यादा हो जाएगी पेज फॉल्ट रेट, देन इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसेस और द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. एफिशिएंसी पर इम्पैक्ट होगा. सो व्हाट इम्पैक्ट इज इट गोइंग टू क्रिएट? तो थ्रैशिंग एक्चुअली है क्या, कब होती है थ्रैशिंग, व्हाट आर द रीजंस फॉर सिस्टम टू थ्रैश, हाउ टू कंट्रोल थ्रैशिंग, एंड देन रिलेटेड टू दैट there is an important model जो आपने प्रिपेयर करना है from gate exam perspective. आपको कह रहा हूँ, if you have not studied, please do study. That's called working set strategy. मैं यहाँ पर YouTube के लेक्चर में भी आपको थोड़ा ओरिएंटेशन दूंगा with regard to working set model या working set strategy. How working set model और working set strategy helps control thrashing. तो ये सारे कुछ टॉपिक्स है in the performance of virtual memory system. यहाँ पर हम देखेंगे, डू वी हैव, ठीक है, यहाँ पर मैं आई विल स्टार्ट माय डिस्कशन फर्स्ट विद द टेम्पोरल इशू. लेट्स स्टार्ट टेम्पोरल इशू. ठीक है, सो फॉर दैट वी विल टेक a simple framework. Suppose for example if I say the main memory access time, average memory access time, time on an average required to access main memory for reading or writing, main memory access time is, let us say, m. Generally in practice the value of m is in the order of microseconds or maybe nanoseconds. So here I am saying in general m units. And on an average page fault service time, जो टाइम लगेगा पेज फॉल्ट सर्विस करने के लिए, that involve disk access, right? So that may involve empty frame case or non-empty frame case. It may vary. Sometime I have seen questions in previous papers of GATE. They vary the page fault service time for different cases, like page is empty, page is not empty, and so on. So page fault service time, let us call it as some S units. And naturally and obviously, the value of S will be much greater than the value of M. ये काफी ज्यादा रहेगा. Maybe 10 power 5 to 10 power 6 times faster, because disk access जो होगी बहुत slow access होगा. Disk access generally in practice is in the order of milliseconds, and for example if memory access time is in the order of nanoseconds, so a nanosecond is 10 power minus 9, millisecond is 10 power minus 3. So you can see the difference is definitely 10 power 6 times. I would say that main memory access time is 10 power 6 times faster than disk access. So S is much greater than M. So boys and girls, effectively and essentially the performance will depend on the parameter called page fault rate. Page fault rate, I generally call it as P. So what is the definition of page fault rate?
द डेफिनेशन बनेगा नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, कितने पेज फॉल्ट्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स बाय टोटल रेफरेंसेस मेड बाय द प्रोसेस. दिस हाउ वी कैलकुलेट द पेज फॉल्ट रेट, टोटल रेफरेंसेस. सपोज इमेजिन कीजिएगा आई एम मेकिंग 100 रेफरेंसेस, आउट ऑफ 100 रेफरेंसेस अगर प्रोसेस ने 30 पेज फॉल्ट्स किए हैं तो पेज फॉल्ट रेट बनेगी 30/100.3 इन द स्केल ऑफ 0 to 1, 30% 0.3. अगर 50 पेज फॉल्ट्स हो रहे हैं तो 50/100 0.5. तो जितना पेज फॉल्ट रेट ज्यादा होगी उतना इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम बढ़ेगा, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम बढ़ेगा, राइट. सो पेज फॉल्ट रेट इज गोइंग टू इम्पैक्ट very much the performance of the system. So naturally from the page fault rate we can calculate page hit ratio. Page hit ratio that will be in the scale of 0 to 1, 1 minus 2. अगर पेज फॉल्ट रेट 10% हो पेज हिट रेशियो बनेगी 90%. पेज फॉल्ट रेट 90 अगर 20% हो तो ये 80% होगा and so on. So based on this the formulation of effective memory access time or effective access time, we say effective memory access time or effective access time for demand paging is given as 1 minus p, page hit ratio. Page hit कहाँ हो रहा है, main memory, plus p into s, page fault rate, so average access time s. So this is the equation which is given in the textbook of 𝐂𝐤𝐿 for demand paging. Okay, for demand paging. So this extract, this content or this equation you can refer from 𝐂𝐿𝐿 text. So generally यहाँ पर एक बहुत बड़ा confusion होता है. Many times student ask, sir, why we are not writing 1 minus p into m plus m, and then here why we are not writing p into s plus m. See, boys and girls, generally, I mean that there is no concrete answer for that given in the textbook of 𝐂𝐿𝐿 or any other textbook. Of course, in other textbook this equation also is not given, and there were questions asked in earlier papers. मैं यहाँ पर भी लेकर आया हूँ questions which were asked based on directly this equation. It is not like some educators, some teachers would say 1 minus p into m plus m and s into p plus m, following the tradition of simple paging. But here the argument generally that is given that can be considered for not considering 1 minus p into 2m and not considering s into p plus m or p into s plus m is that basically we are not considering, we are not taking into consideration the translation time, address translation time. We are just referring to the time of accessing the page, that's it. Page is accessed where main memory, so main memory access time hoga. The translation time is not considered. That can be taken as simple justification perhaps. And second justification that we can give for this particular reason is the value of s जो है is significantly very large in front of m. So there is no point in adding s plus m. There is no point in. So that is the reason for discarding m. So we are discarding m here, we discard m here and take into consideration average access time. So ये है equation for the effective memory access time in demand paging. Otherwise simple paging with TLB में आप देखो we are going to add m plus n, right? In paged memory access or paging with TLB we say m plus m. So there we are considering the full access. And thirdly, और एक भी जो गेट का क्वेश्चन था वो भी आपको बताता चलूं, अगर TLB इन वर्चुअल मेमोरी अगर आप TLB का कॉन्सेप्ट यूज करोगे then again we are going to write the full, because जब TLB आएगा then we talk about the full time, full access time. So these are some variations that we have seen. So based on this variation, let us try to build up some understanding with some questions of PYQs exactly based on this equation. This is the first question I want you to work out. Look at this first question. ये PYQ है, exactly PYQ. Of course, there are options given A, B, C, D. I have removed the options just for simplicity. I would appreciate you work out this problem and let me know what is the answer for this. Let me know the answer. आप check कर सकते हो in PYQ. I don't remember the year. आप ये question check कर सकते हो PYQs में, and you can also see the options and you can check that it matches exactly with the equation that we have discussed just now. I would appreciate please solve and let me know. Let me see how many of you can solve. देखेंगे कितने बच्चे solve करेंगे. Please work out this and let me know what is the answer for it. I hope you are doing.
So let's review the question, boys and girls. Time to service a page fault is on the average 10 milliseconds. So therefore, in terms of our notation, the value of a page fault service time is 10 milliseconds. While a memory access takes 1 microsecond, look at that, the value of memory access M is 1 microsecond. Then a 99.99% hit ratio, मतलब पेज हिट रेशियो, पेज हिट रेशियो के लिए हमने नोटेशन यूज किया था 1 - p. ये है परसेंटेज में. अगर ये परसेंटेज को स्केल ऑफ 0 to 1 में आप करोगे, इट विल बिकम 0.9999. am I right? अगर ये परसेंटेज को स्केल ऑफ 0 to 1 में कन्वर्ट करोगे, इट विल बिकम 0.9999. क्योंकि अगर 10% हो तो इट विल बिकम 0.1, 50% हो तो इट विल बिकम 0.5. तो इसी तरह दिस विल बिकम 0.99. सो देयरफॉर द वैल्यू 1 - p इज 0.9999. एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p, पेज फॉल्ट रेट कितना बनेगा? 1 - of this, 1 - of this, so that will become 0.0001. यह पेज फॉल्ट रेट. पेज फॉल्ट रेट बनेगा 0.01%. सो एक्चुअली पेज फॉल्ट रेट will be 0.01%. इसका 1 - of this, right? So 0.01% is this much divided by 100. तो you know all the 4 parameters. और effective memory access time पूछा गया है, right? Average memory access time. So average memory access time under demand paging. So same equation आप use करोगे, 1 - p into m plus p into s. ठीक है? तो 1 - p is given to be 0.9999 into memory access time is 1 microsecond, 10⁻⁻⁶ seconds, plus page fault rate 0.0001 into page fault service time 10 millisecond, 10⁻⁻3. अब क्वेश्चन यहां पर यह होगा कि आप एक्सप्रेस कैसा करोगे टाइम? आर यू गोना एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ माइक्रोसेकंड्स, आर यू गोइंग टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मिलीसेकंड? that you can decide based on the page fault rate. तो अगर आप गौर करो, page fault rate is very high, page hit ratio is very high, 99.99% hit ratio है. तो मतलब page fault rate is very low. page fault rate देखिएगा 0.01, very low page fault rate, बहुत ज्यादा कम है page fault rate. तो मतलब maximum time page hit होगा मेमोरी में, so therefore it is more desirable to express the effective memory access time, average memory access time in terms of memory access time. Memory access time दिया गया है माइक्रोसेकंड में, तो हमें effective memory access time भी माइक्रोसेकंड में ही कंप्यूट करना है. और ऑप्शंस अगर आप ये क्वेश्चन के देखोगे ओरिजिनल PYQ में, the options are given in the form of microseconds only. So let us convert this value into whole microsecond. तो ये तो ऑलरेडी माइक्रोसेकंड में है 10⁻⁻⁶, इसे आप कन्वर्ट करना होगा. So I will rewrite this 0.9999 into 10⁻⁻⁶. plus this become 10⁻⁻4 into 10, 10⁻⁻3, 10⁻⁻3. So this will become, second factor will become 1 into 10⁻⁻6. Got it? This 10⁻⁻4 into 10, 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 into 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, so 1 into 10⁻⁻6. तो ये बनेगा, देखिएगा 1 plus 0.9999. So therefore 1.9999 into 10⁻⁻6 seconds. तो आप इसे लिख सकते हो 1.9999 microseconds, और ये है आपका एग्जैक्ट आंसर एज पर दी ऑप्शंस. ये आंसर है. सो ऑलमोस्ट यू कैन से दिस इज 2 microseconds. ऑलमोस्ट, अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता तो शायद हम लिखते 2 microseconds. ऑलमोस्ट 2 microseconds. तो कहने का मतलब यह है, अगर आप यहां पे कंक्लूजन देखो, व्हेन अ पेज फॉल्ट रेट इज वेरी लो, 0.001%, अगर वेरी लो पेज फॉल्ट रेट से भी इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम गॉट डबल्ड, क्योंकि मेमोरी एक्सेस टाइम वाज 1 माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड से 2 माइक्रोसेकंड हो गया. तो यू कैन इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ पेज फॉल्ट रेट बिकम हाई. अगर यही प्रॉब्लम में इफ यू वुड हैव टेकन, सपोज फॉर एग्जांपल
अगर हम यहां पे कहते, सेकंड केस आई एम डिस्कसिंग ऑफ दिस, मेमोरी एक्सेस टाइम इज 1 माइक्रोसेकंड, इसका एक सेकंड केस ले रहा हूं मैं, केस 2, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इज 10 मिलीसेकंड, लेट अस से। नाउ सपोज इफ आई वुड हैव गिवन पेज फॉल्ट रेट जो यहां पर 0.01% है, 0.01% के बजाय अगर पेज फॉल्ट रेट 10% होता, 10%, सो दैट मींस 0.01% से आप 10% कर रहे हो, दैट मींस यू आर मल्टीप्लाइंग दिस बाय 1000 टाइम्स, 1000 into 0.01, 10%, 100 टाइम करने से 1% होगा, so 1000 टाइम। तो पेज फॉल्ट रेट इफ यू आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 0.01% to 10%, 0.01 to 10%, then what impact it is going to create on effective memory access time? Effective memory access time कितना बनेगा, कैलकुलेट कर सकते हो आप, you can draft the equation again. So here again for the second case I can redraft the equation. Effective memory access time बनेगा 1 minus p is 0.9 into 10 power minus 6, 1 microsecond seconds, plus 0.1 into 10 power minus 3, 10 milliseconds. So 10 into 10 power minus 3 seconds, ये बनेगा इक्वेशन। तो अगर माइक्रोसेकंड में आप कन्वर्ट करो so that you can compare the time, so I can convert this as 10 power minus 3, सुनिएगा, this 0.1 into 10, 10, so it become 1 millisecond, 10 power minus 3, 1 millisecond is 1000 microsecond, so this can be written as 0.9 into 10 power minus 6 second plus 1000 into 10 power minus 6 seconds. So therefore this will become 1000.9, 1000.9 microseconds. पेज फॉल्ट रेट 1000 टाइम बढ़ाने से इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम भी 1000 टाइम इंक्रीज हुआ है, 1000 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। 1000.9 roughly you can take 1000, so 1000 microsecond is 1 millisecond, so it has increased to 1 millisecond from 2 microseconds earlier. ये कंपैरिजन है with regard to the impact on effective memory access time. एक और क्वेश्चन लेते हैं on this. Look at this. This is also a PYQ. Please work out and let me know the answer for it. This is also a PYQ. Please work out and tell me what is the answer for this. Read the question. If an instruction takes I microseconds and a page fault takes an additional j microsecond, that means with a page fault it takes additional j. Instruction time with a page fault takes additional j microseconds. The effective instruction time. तो यहां पर effective memory access time नहीं पूछा गया है, effective instruction time. If on the average a page fault, one page fault occurs every k instructions, one page fault occurs every k instruction, तो effective instruction time कितना होगा? यहाँ पे if an instruction takes I microsecond and एक word add करना होगा with a page fault takes an additional j microseconds. तो यहाँ पर we need to compute effective instruction time in demand paging for the given data set, और वही कुछ इक्वेशन आपने बनाना होगा जो हमने पहले देखा था. Whatever we have seen earlier, we have to follow the same thing. We have to follow the same thing. So check it. Now what is the page fault rate? In the given system, the page fault rate is 1 by k. No page fault rate, page hit ratio is 1 minus 1 by k. 1 minus 1 by k. So check it. So page hit जब होगा 1 minus 1 by k, page hit into instruction time is I. क्योंकि अगर page instruction takes I microsecond, so I microsecond for page hit. अगर page fault होगा 1 by k, then time is I plus j. Additional time j. I plus j. तो क्या बनेगा? This you expand I minus I by k plus I by k plus j by k. So minus I by k plus I by k cancel, जो simply बनेगा I plus j by k. So this is the equation of effective instruction time. ये आपका equation है. That's it. ये है philosophy of effective instruction time. No, Swaroop Sahu, you made a mistake. It is not I plus j into k. Check it.
दिस ऑल्सो गेट क्वेश्चन, आप एग्जैक्टली चेक कर सकते हो ऑप्शंस, ये मैंने ऑप्शंस यहां पे नहीं किया है पर्पसफुली। स्वरूप, चेक वेयर यू हैव मेड द मिस्टेक। पेज फॉल्ट, दिस पेज हिट, पेज अगर हिट होगा तो इंस्ट्रक्शन टाइम इज आई, अगर पेज मिस होगा तो एडिशनल टाइम आई प्लस जे, दैट्स इट। पेज हिट इन मेमोरी, टाइम फॉर एक्सेसिंग इन इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी, पेज मिस और पेज फॉल्ट होगा तो टाइम होगा आई प्लस जे, दैट्स इट। यह फिलॉसफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक ले लेते हैं। कम ऑन, आई वांट एवरीबॉडी टू वर्क आउट दिस। ये भी क्वेश्चन, अब यहां पर मैंने मल्टीपल ऑप्शन भी आपको स्पेसिफाई किया है, आप देख सकते हो। हाउ इन द गेट ऑल्सो दे आर फॉलोइंग द सेम इक्वेशन, 1 माइनस पी इंटू एम प्लस पी इंटू एस, वही कुछ इक्वेशन पर आपको ये आंसर बनेगा, उसके लिए मैं क्वेश्चन आपको लेकर आया हूं। कम ऑन, रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस, बॉयज एंड गर्ल्स। दिस ऑल्सो पीवाईक्यू, और ये पीवाईक्यू के बेसिस पर आप कंफर्म कर सकते हो कि जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पर बताए हैं, that we are following and that is being followed in GATE also. Come on, read the question. Okay, Swaroop, no problem. Swaroop and Vijay and other people, please work out this problem. Everybody, please work out this problem. Okay, option B is okay. Other people also, please. Consider a process executing an operating system that uses demand paging. The average time for memory access in the system is M. Memory access time is M. If the corresponding memory page is available in memory, and D units if the memory access causes a page fault. Page fault service time is D. It has been experimentally measured that the average time taken for memory access time in the process is X units. ठीक है, effective और average memory access time is X units. ये EMAT है. Which one of the following is the correct expression for the page fault rate? Question पूछा गया है page fault rate. Page fault rate. तो सीधा सीधा आपने इक्वेशन बनाना है, यूज करना है इक्वेशन। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हमने कहा इज इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू एम मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस पी इंटू एस। सो एज पर द गिवन डेटा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इज गिवन एज एक्स। हमें वैल्यू ऑफ पी डिटरमिन करना है 1 माइनस पी, मेमोरी एक्सेस टाइम इज गिवन एज कैपिटल एम, सो एम प्लस पी इंटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम की वैल्यू दी गई है डी यूनिट्स. D units. These are equations. So I have to solve for P from here. I have to solve for P from here. Yes. So अगर आप solve करोगे P by bringing out the common factor X minus M is equal to, अगर P की वैल्यू आप कॉमन लोगे, so it is D minus M. D minus M. So the value of P straight away from here is X minus M divided by D minus M. Exact answer, exact option. So therefore option B. So that's what I wanted to tell you, boys and girls, कि जो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का कॉन्सेप्ट और इक्वेशन जो यूज किया गया है वो गैल्विन के कॉन्सेप्ट से है, गैल्विन की टेक्स्ट बुक से है, एंड दिस द इक्वेशन फॉर दिस एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम. ठीक है. So you cannot get this answer otherwise, as some people, as I said earlier, some educators are following, or some students are also basically compelling that, no sir, I will go with 1 minus P into 2M plus P into S plus M. अगर आप ये इक्वेशन से जाओगे, then you are not going to get a mapping with any of the answers. ये आंसर आपको कोई भी नहीं, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा आपका. You can check. So it confirms that we have to, for demand paging, for demand page systems, we have to go with this approach. ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, बार बार आपको कह रहा हूं.
So boys and girls, this is the first performance issue, effective memory access time in demand paging. As I said, second important issue in the ये issue हमने address किया. So like that, there are other PYQs also. You can basically take them as a matter of practice and solve them on the same concept. कुछ questions में आप ले सकते हो, like I may have a TLB. So what will be the impact on the effective memory access time with TLB? You can formulate that equation and then solve such similar questions. And in case if I have, for example, time for, if it is given like page being modified, page being clean, page being not modified, page being dirty, उसका भी अगर ratio दिया गया है and the access time दिया गया है, then you can again redraft the equation and get the answer. So you can solve variety of problems on this concept or this equation. Then second important issue that deals with virtual memory, second performance issue is page replacement technique. As I said, one of the important aspect in the implementation of virtual memory is page replacement. जब पेज फॉल्ट होगा और फ्री और पेज अवेलेबल ना होगा मेन मेमोरी में, तो हम कैसे वी आर गोना ब्रिंग द पेज इन द मेमोरी इफ आई डोंट हैव एन एम्प्टी फ्रेम. अगर एम्प्टी फ्रेम होगा देयर इज नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट. अगर एम्प्टी फ्रेम ना होगा तब आपने रिप्लेसमेंट अप्लाई करना होगा. तो हमें डिसाइड करना होगा कि विच ऑफ द एग्जिस्टिंग पेजेस इन मेमोरी शुड बी विक्टिमाइज्ड टू ब्रिंग द फॉल्टेड पेज इन मेमोरी. तो उसके लिए वी हैव ऑप्शंस. तो उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा some concept called reference string, then frame allocations, and after that we start our discussion. So that will need another dedicated lecture. In the next lecture I will take up the issue of page replacement and I will solve some problems on that, and then I will also start the discussion on thrashing. What is thrashing, impact of thrashing, how to control thrashing, thrashing control strategies, ये सभी कुछ हम next lecture में लेते हैं. आज के लिए सिर्फ इतना ही. Okay, so take care, thank you, and continue your learning experience on YouTube through 𝐂𝐚𝐭𝐜𝐡 series. Thank you so much.